experiment at certain ages. You can experiment. जैसे मेरी एज है, जो मर्जी करो. Yes, sir. इसी तरह ये शुरुआत तो करियर में भी you can do anything. People do experiment. अमेरिका में तो बहुत कॉमन होता है. हाँ, वहाँ जो प्लम्बर था वो डॉक्टर बन गया, ऐसे भी होता है. वहाँ तो बहुत है. अभी इंडिया में भी उतना प्रोग्रेस हुआ नहीं है, समझ नहीं है वहाँ लोगों पर को. मिनिमम वेजेस इतनी ज्यादा. हाँ, तो वो इंडिया में भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है कि देयर इज लाइफ बियॉन्ड सम कोर्सेज. उसी के पीछे नहीं, बाकी बहुत कुछ करा जा सकता है आजकल. मैनी ऑप्शंस. मतलब जो लॉयर वाले लोग हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग प्रीटी गुड. यस सर, बिल्कुल. जो लॉ परस्यू करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इक्वली गुड. हाँ, So I think काफी. there are good options are available. It is not end of the world. हो बिल्कुल. जाए ठीक है, लेकिन उसको दिल पे कोई लगाने की बात नहीं लगी मुझे भी. It's not worth it. All right. So let's start the discussion. यस सर. Okay. Okay. So first we continue to do as usual our solved questions, and then we will proceed to unsolved. एक बार थोड़ा वो grip आ जाएगी formulas पे. यस. Hopefully that will. Hey, what's wrong with this? I'm trying to switch on the whiteboard, and it won't let me start the whiteboard. बताओ, इसके मतलब you're able to see any? नहीं सर. Okay, I'm just coming back. ओके. I'm making you the host. ठीक है. Okay. यस सर. Alrighty. So I'll go to the next page, which is, I think we were on page 4. हाँ. I'll go to page 3. I think वो empty है. हाँ, एम्प्टी है वो. चलो, चलिए let's start. I think you have fairly good idea now. पता है. Let's practice and so I think most of you, if you see, we have already discussed NCRT and NCRT exemplar. यस So that will leave you with only assignment actually. But yes, we won't be able to do 100 questions from exemplar, but जो practice के लिए चाहिए कर लेंगे. ठीक. We are on page number 3. Okay, got it. Page number 3, find the values. Two signs are getting added and you have to get a cos. So you can do a sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Okay, I won't interrupt you. You make up your own mind. Okay, but let me do one thing which might be of some help to you. Is जो last की properties है ना, last few, let me just copy them so that they're handy with you. Although finally you will need to memorize them. But still, if it is of some help to you, you never know. So I will. Okay. So those are the properties you may. I'm assuming the simpler ones there is no need to copy. नहीं, बिल्कुल. Okay. Sine of sine inverse x we know already, right? So and 1 by x is also fairly well understood by you. Yes, हाँ, वो सब कर लो. हाँ ठीक है. So this is slightly maybe वही है, but मुझे ये I like this tan inverse 1 by x if you see. हाँ, right? तो भी better लग. This is interesting, right? This is minus pi plus. तो एक तो tan inverse वाला रूल है और एक वो भी है कि minus pi plus cot in. So there are conditions within that, if you notice. Do you see on the right hand side the conditions? हाँ, yes. Wait,
let me just, I think I have not. So this is the one I'm referring to. I think this is something we have not studied as yet. ये शायद क्वेश्चन ही नहीं आया ऐसे. So this is important. So I think we've missed out. Let me just copy. I think हमने discussion भी नहीं करी इसकी. Note this. Very, very different हाँ, one. ये नहीं So करा this we know. But look at this part. ये तो हमें पता है ना 1/x वाला. Yes, I think sin inverse और cos inverse हाँ, ये inverse तो के लिए हमने हमें यूज पता भी था. कर लिया सुबह. हाँ, but ये look at this. हम्म, So it depends on if x is greater than 0. If it is a negative, then use this. okay. Okay. And then look at tan inverse x. Okay. If x lies between 1 and 1, use this. If it lies is positive, use this. And if it is -1 to 1, with not inclusion of 1 extremes, then use this. So 2 tan inverse x has 3 forms in itself. I think this is new. Yes, sir. And I think this is also new because it is largely dependent on what is the value of x you take. So this is new. Yes. This is interesting. ये नहीं करा हमने. These are new properties. And that is why I stress everyone, please complete NCRT exemplar because the surprise is there. Not in NCRT. There is no surprise. So I think there is no rule for sine inverse x plus sine inverse x. The rule is for sine inverse x plus cos inverse x. Hmm. So ये दोनों तो directly, it's very hard to. नहीं कर सकते. But you have to, anyway, you don't have to, you have to worry about the X. value of x. So you don't have to prove LHS is equal to RHS. Your focus on the goal is to find the value of x, like a quadratic equation, find the value of x. That is where your mind is. So can we put x equal to something or solve then left hand side and right hand side with the help of x equal to something if we can't? For example, it gives me a hint. So if I put x is equal to sine theta, then I take LHS, will become sine inverse sine theta plus sine inverse 1 minus sine theta. And RHS will become cos inverse sine theta. So I can write this as theta. And this I can, how can I get a sine here? So how do I write this as sine inverse 1 minus? Okay, so we don't know how to tackle this, okay? So let's say we don't know. 1 minus sine theta is relatively unknown. So, but this we know. Cos inverse of cos of 90 minus theta. This we know. So theta plus sine inverse. We have to get rid of sine theta somehow. Because baki sab to is getting converted. 90 minus theta. So this theta will also go on the other side. So this will become sine inverse 1 minus sine theta. जहां तक पॉसिबल हो सकता है वो तो सिंप्लीफाई करते जाते हैं. बट वी रियली डोंट नो कि इसका क्या होगा. ये जो अंदर साइन इनवर्स, ये जो साइन थीटा यहाँ पे आ गया, वी रियली डोंट नो. बट लेट्स सी if we can make sense of it. Okay, so this is 90 minus 2 theta. Can we write it as 1 minus sine theta is equal to sine of 90 minus 2 theta? Okay, so this actually becomes 1 minus sine theta is equal to cos 2 theta. And this is 1 minus sine theta is equal to 1 minus 2 sine squared theta. So this gets cancelled. So this gets 2 sine squared theta minus sine theta is equal to 0. And 2 sine theta minus 1 is equal to 0. And sine theta is equal to 0. And sine theta is equal to 1.
So theta is equal to 0. Hmm. Theta is equal to pi by 2. So we know sine theta. So sine theta was x. So put theta here. So x will be 0. And if Hmm. you put theta in this as pi by 2, x will be 1. So you have two answers. X is equal to 0 and x is equal to 1. Correct. So to me, this question was more of substitution and trying Hmm. to simplify and getting rid of trigonometric. काफी trigonometric था. This is question number. Example. Okay, so sine. इन्होंने कोई और मेथड से करा है, मेरा मेथड अलग है और आंसर्स मेरा आई हैव गॉट 1x इक्वल टू 0. Hmm. व्हाट इज द अदर वन आई गॉट? 2 sine theta, 1 and 1 gone, so 2 sine theta. Oh, sorry here. There is no 2 here, right? Would have taken Oh. 2 sine theta common. I Uh, was wondering here ki why they're getting half here. So this is sine theta and I hmm. will just rub this off. तो अंदर हाफ रह जाएगा ना सिर्फ. Yes, sir. So I think 2 कॉमन नहीं है. I think sine theta कॉमन है. And therefore what you get is this. So your sine theta is equal to 0 or Hmm. sine theta is equal to 1. So your theta is equal to 0. This was equal to x, by the way. Hmm. So if theta is equal to 0, so theta is equal to 0, x is equal to 0. And Hmm. if sine theta is equal to 1 by 2, this was x, by the way. We Yes. started with this. Put x is equal to sine theta. So two answers, 0 and 1 by 2. ठीक है. ठीक है, you got it right. ये calculation mistake थी. Hmm. ठीक है. जो वो दिए ना tan के 3 हाँ. और cot inverse 1 by x के 3 जो रूल दिए हैं, जो हमने ऊपर पढ़े ये वाले, Hmm. these are twisties, मतलब ये वाले. So we will Yes. have to ये पहचानना is cumbersome. हाँ. ये थोड़ा सा twisty है और I think this one is also bit difficult. No, this was our question, by the way, so not difficult. We had copied that cot inverse pi minus cot in tan inverse 1 by x. Hmm. Okay, I'll just copy it again. Anyway, let me just first copy the next one. Okay, I've copied. Okay, tan inverse देख के you should be very, very careful because there are Hmm. 3 conditions at least for 2 tan inverse x, Yes, sir. which can become. ठीक है, so this is it. ये तो नहीं लग रहा tan का. Hmm. I think this is again quite similar to. So we have to solve for equation. So solve means get the value of x. What X. value of x will satisfy this?
Okay. 6 root 3n. Hmm. Hmm. Tricky. और x के बारे में कुछ बताया भी नहीं कि व्हाट इज x, Hmm. बट जस्ट Yes, sir. मतलब थोड़ा हिंट दे देता है x इज ग्रेटर देन 0, तो हम सोचते हैं 10 का क्वेश्चन है, Hmm. बट नाउ इट इज एब्सोल्युटली blank. And so two sine inverses getting added. अच्छा, एंगल भी अलग अलग हो गए ना, बिकॉज दिस इज Hmm. 6x, दिस इज 6 रूट 3, Yes, यू sir. कांट इवन कंबाइन. वो रूल जो है, एंगल शुड बी सेम ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, बोथ आर x एटलीस्ट. यहाँ तो Hmm. एंगल ही अलग है. Okay. But just by the look of it, I have something in my mind, but I will not reveal it right now. You think, Hmm. otherwise you will call me. Any insight? Nice, sir. No, see, the biggest hint to me, मतलब मेरा hint guess है, if I do sine inverse cos x and I put it, this is minus pi by 2 minus sine inverse 6 root 3, ठीक है? So this thing can be written as, for example, sine of what? Sine, this is sine inverse, what angle? Minus 1? Hmm. Just a guess. मतलब sin pi by 2 is 1. So sin of pi minus pi by 2 is minus 1. That is one thought that comes. तो मैं pi by 2 को उधर ले जाके what I want to do is I want to take sine of both the sides after this and I say okay, मतलब 6x equal to, that is what I mean. So I remove, take sine of both the sides. So this gets reduced to 6x and this Huh. becomes sine of minus pi by 2 minus sine inverse 6 root 3. So this is sine A cos B, right? And minus sine B cos of A. Hmm. या साइन इनवर्स उधर ले गए या कह लो टेक साइन ऑफ बोथ द साइड्स. Okay? And I can take sine inverse here. So this will become sine of. So this is minus 1. I can write this as cos of cos inverse pi by 2 minus 6 root 3x.
And okay, so this, if you notice, ये तो sine inverse becomes 6 root 3. Cos of minus pi by 2 is essentially 0. Sorry, cos inverse of minus, I have written cos of minus pi by 2, sorry. Cos है ना ये तो, normal cos. Because I have sin A cos B minus sin B cos A. ये मेरे angles है ना. Agreed. So this is 0, cos of pi by 2. So if I have to rewrite this, how do I handle this? I say, okay, this is 6x is equal to minus 1 multiplied by, so this reduces to number pi by 2 minus 6 root 3x. Cos and cos inverse get cancelled. So if I can rewrite this as minus 6x plus 6 root 3x is equal to pi by 2. And therefore, if you take x common, this becomes root 3 minus 1 is equal to pi by 2. X is equal to pi by 2, 6 root 3 minus 1. So some angle, I mean, this is an angle, right? This is an angle. Agreed. So these two angles, some x is satisfying and the sum of angle is coming out to b minus pi by 2. The hint that I got was, क्योंकि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा left side, we can't do anything. So take one of them on the other side and take sine of both the sides. Or even if you don't want to do that, just take sine of both the sides. So this would have become sine A and this would have become B angle. A angle and B angle. तो sine of A plus B लगा लेता मैं left पे. But मुझे pi by 2 ज़्यादा appealing लग रहा था क्योंकि इससे 0 हो जाता है ना ये. So it is slightly less complicated. ठीक है. No, my calculation is again wrong यार. ये पता नहीं क्या यार. Okay, I'll show you the answer. Just find the mistake. I think I have not cos of, I'm not sure यार कि the angle of root 3x in the question it appears is the x is also a part of root, but you can just see, we will just see the answer because technique is fine, calculation is wrong. Okay. Which is a perpetual problem I do. I lose track of the calculation. Okay, let me just go back. This is, let us see how they have solved it. So he has taken it on the other side if you notice. ले गया. ठीक है. उसके बाद इसने करा साइन ऑफ a माइनस बी. अच्छा, इसने साइन ऑफ पाई बाय 2 ये रूल जो था ना ये वाला, मैंने तो साइन a प्लस बी करा ना. आई डिड a प्लस बी, आई डिड साइन a कॉस बी. अच्छा, एक इसका ये माइनस साइन है ना ये, आई थिंक हमसे ये गलती हुई है कि हाँ. सो दिस इज अ ब्लंडर राइट. अगर दोनों नेगेटिव थे आई शुड हैव टेकन माइनस हियर, दिस वुड हैव बिकम प्लस. यस सर. बट एनीवे अगर ये प्लस भी हो जाता तो cos पाई बाय 2 इज एनीवे 0, तो ये तो 0 हो ही जाता. तो मेरा आया माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस माइनस 1 प्लस बन जाता मैक्सिमम. ये मेरा माइनस और साइन ऑफ, अच्छा नहीं ये तो मैंने बोल दिया बाहर ही है, दोनों माइनस थे ना. सो माइनस मैंने पहले ही बाहर ले लिया. तो दिस इज साइन ऑफ प्लस पाई बाय 2. दिस इज, हाँ तो ठीक था -1 एक ठीक है. साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1 and cos of sine inverse, so this becomes pi by 2 minus 6 root 3 by x. बिल्कुल ठीक है. Okay, so here is the minus 6x is equal to minus pi by 2
plus 6 root 3 and then plus 6 root 3. तो ये माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन क्या बनते, प्लस, हाँ उधर जाके बन जाते। बट इसका क्या बन रहा है, देखो, लुक एट दिस, दिस इज नॉट क्लियर टू मी। यहां तक हमारा भी आइडेंटिकल चला है, उसके बाद एक कंपोनेंट इसका 0 हो गया। इसका कॉस ऑफ साइन इनवर्स 6 रूट एक्स है। ओके, 6x इज इक्वल टू कॉस ऑफ, मेरे इन माइक, हाँ मेरा भी कॉस है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 6 रूट 3x, इसका भी वही है। लुक एट दिस, एंड आई ऑल्सो हैव -1 आउटसाइड, जो साइन ऑफ पाई बाय 2 का 1 बन गया था ना, माइनस साइन तो दोनों में था, और वो दूसरी टर्म तो मेरी 0 बन गई थी। यस वी आर गोइंग आइडेंटिकल सो फार। 6x इज इक्वल टू कॉस ऑफ, फिर इसने लिख दिया इसको कॉस, हमारा यहां तक आइडेंटिकल है। ये क्या करा इसने फिर, देखो, इसको मैंने करा 6x इज इक्वल टू माइनस, डिड वी ऑल्सो गेट, वी ऑल्सो गॉट ना, बट मेरे, लुक एट माई, let me see my answer with a different color so that I can identify. So I wrote sine of, this is minus sign and this is also minus sign, so I took the minus out and I made it pi by 2 plus this much. Okay, so sine of a and cos of this, मैंने तो साइन ए कॉस भी लगाया ना, तो मेरा साइन इनवर्स, मेरा आ गया कॉस ऑफ साइन इनवर्स 6 रूट 3, और दूसरा तो मेरा 0 बनी गया, कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, मेरा कॉस आया, और मेरा इसको मैंने लिख लिया कॉस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 माइनस 6 रूट 3। अब ये मेरा इंटू 0 हो गया। सो डिड ही ऑल्सो गेट दिस ना, आई थिंक इसका भी कॉस और कॉस सेम नहीं है। इसके बाद इसने कुछ और करा है जो हमने नहीं करा है, इसने क्या कर दिया ऐसे डिफरेंट, कॉस ऑफ, मेरा भी कॉस ही कॉस है, नहीं इसका कॉस और साइन इनवर्स है। मैंने क्या करा, इस साइन इनवर्स को लिख दिया है पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 6 रूट 3 एक्स, मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया क्योंकि आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ कॉस एंड साइन इकट्ठे आ रहे थे ना। Yes, sir. So I'm going to convert it into cos inverse. So cos inverse together become, मतलब ये पूरा वो पाई बाय 2 जो मैंने लिखा है, बट इसने इसको साइन इनवर्स एक्स को, इसने जो करा है, ही इज डन इट इन अ डिफरेंट मैनर, दैट ही इज कन्वर्टेड साइन इनवर्स 6 रूट 3 एक्स इज इक्वल टू, बाहर कॉस भी है, वो तो खैर वेरी सिंपल, बट आई हैव डन दिस कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 6 रूट 3 एक्स, दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी। इससे मेरे को, अगर मैंने ये करा है तो वाई आई हैव नॉट अप्लाइड कॉस ए कॉस बी, वाई अप्लाइड, अच्छा नहीं मैंने वो नहीं करा, मैंने फिर बोला कि गलती दिख गई मुझे, गलती दिख गई गलत लगाया। साइन इनवर्स 6 रूट 3 एक्स इज नॉट दिस, इट इज पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 6 रूट 3 एक्स। भाई साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, आई शुड हैव रिटन इट एज पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 6 रूट 3, और आई हैव जस्ट स्ट्रेट अवे रिटन इट एज कॉस इनवर्स। ये कौन सा रूल है, तो कोई रूल ही नहीं है। Yes, sir.
वही मुझे लग रहा था there's something blunder I've done which I'm not able to capture किया, लग तो सेम ही रहा है लेकिन फिर लग भी नहीं रहा सेम है, तो आई थिंक यहाँ से गलती हुई है ये वाली. we if we rewrite this is where the difference is. ये मैं सोच रहा था उनकी यार लग नहीं रहा, अपनी कोई कैलकुलेशन में फिर हमने कोई प्रॉपर्टी में ही, यस सर, और वही हुआ, ठीक से प्रॉपर्टी नहीं लगाई लगाएंगे. गई है वो, पर दिखता नहीं है ना इसके अंदर कि कहाँ पे है, वेरी हार्ड. सो यस सर. -1 into cos of, I wanted to convert this into pi/2 minus cos inverse 6 root 3x. This should have been my aim. But instead, I just wrote it as cos of cos inverse and I got it out. अब जो rule लगेगा, that is slightly different. So we will have to apply cos A, cos, and then plus. So yeah, this is 0. हाँ, यस सर. So 6x is equal to 6x is equal to 1 multiplied by sine inverse 6 root 3 x. एक second here. Cos of A, cos of B, then sine of A and sine of B. Shabash. When you apply sine of this लगाना है ना, और लिखा क्या देखो मैंने, an idiot man. This is sine of cos inverse 6 root 3x. ये पार्ट 0 हो गया, ये 1 हो गया. यस सर. So we will get sine inverse 6x is equal to, with a minus sign, equal to minus sine cos inverse 6 root 3x. I hope I've written it correctly this time. Sorry यार, एक सेकेंड. नहीं गलत नहीं, है. ये दोबारा लिख दिया. एक बार साइन इनवर्स ये वाला जो था, ये वाला साइन इनवर्स उस साइड भी ले गया मैं, और फिर से मैंने साइन इन लिख दिया यहाँ पे. लिख दिया. अब मैच हो गया. यस सर. So blunder after blunder, no problem. हाँ तो So वही we just need to convert. हाँ नहीं, कई बार क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग होती है तो अभी मुझे मेरा वो है, कौन सा शॉट होता है, कॉफी, वो नहीं किया होता, और इस समय जो है, anyway, so let's convert theta into sin theta. So this is cos, so this is 6 root 3 and this is 1. So this is how much? 1 minus 18 into 3x square, perpendicular. So this is, in terms of sin theta, is equal perpendicular. 1 minus 54x square by 1. Yes, So sir. sine inverse x 6x is equal to minus sine inverse of 1 minus 54x square. So sine inverse goes away. If I take it inside, this will become sine inverse 6x is equal to 54 x square minus 1, because sine inverse minus theta is equal to minus sine inverse theta. So I've taken this minus inside. अंदर ले गया. So this is 6x is equal to 54x square आ गया. So all struggle was not due to inverse trigonometry, but because of wrong application of, ठीक से नहीं लिखा जा रहा था. It was not written very clearly, and the reason is ink also, I'm telling you, क्योंकि इसकी ink exhaust हो गई है, and I've stopped seeing it properly. मुझे ठीक से अब not able to see where is what. तो थोड़ा सा मतलब spreading of raita took place. Okay, so I move to the next page. Okay. This looks like a very 11th standard trigo question, and fortunately this is more 10 oriented. So
After a long time, tan Baba has come back. So, Loji. Very 11th standard orientation because of these things which I see. So first of all, that angle is getting doubled on the right hand side, right? So this is, and this is 2 tan inverse, mind you. And he has not even bothered to tell us what the tan is. So if I go back to the property, 2 tan inverse, we saw three answers to that. Yes, sir. Okay. And so let me just copy that, and because immediately you see 2 tan inverse x should raise this. You notice this as the 2 tan inverse x, right? So this is quite close. 2 tan inverse or whatever. So the whole thing could be x. This whole thing is x. And these are also multiplied. And so which one to use? Because he has not given any restriction on the values. What is a safe out of these three? Which one do you apply to convert? Is a question mark then. Question number is? Yes. So if nothing is given to you, the easiest approach is to take the easiest one, which is this. So treat this as 2 tan inverse as this one. Tan inverse of 2x. Yeah. 2 tan inverse x. That is really weird question. पूरे को x मानना है. Can you beat that? The whole. वही सोचना पड़ता है. 2 tan inverse 2x. So the whole bracket inside is x. This is the whole bracket is. इसको डालना बड़ा दिक्कत हो जाए. हाँ, you will have to take LCM अंदर. मेरे को आंसर से तो हिंट पता चल गया क्योंकि ये जो है, if you break it down, you can. No, you take this whole thing as x ना, जो मैंने encircle करा है. ये x ही तो है. So your x is tan alpha by 2 tan of pi by 4 minus beta by 2. So if you have to write it, you will write it as tan inverse 2 times tan alpha by 2 tan of pi by 4 minus beta by 2. Okay, so this is, and 1 minus square of this whole thing, which is tan of pi by 4 minus b by 2, the whole square. So which means if you have to, if you notice, if you solve this by opening or taking LCM niche, Yes, sir. right, you may be able to double the angles. For example, you get a sine alpha by 2 cos alpha by 2. Now that's a big victory for you, right? Because this is sine alpha. Yes, sir. Right? So you have to manipulate your tans in such a way that you are able to convert this into doubling of angle. So see if you can solve this. Now this is more like trigonometry and algebra. Dividing, we divide हो रहा है नीचे, you know. So ये square है by the way, okay? This is squarish. ठीक है. So this is tan of a minus b. This one. So you whether you like to open this and get a tan beta. So this is pretty lengthy and very cumbersome to look at. तो देख के ही बंदा मतलब scary that Yes, sir. how the hell do I tackle this? But it's easy if you convert the upper one as this one. इसको खोल लो and you write it as tan inverse 2. You don't have a choice because you need a this cos beta by 2 to go away. Right? So if you write this, this becomes 1 minus tan beta by 2 upon 1 plus tan beta by 2
tan alpha by 2 square. No, so 2 तो ये वाला है ना जो फॉर्मूले वाला है 2. Yes, In sir. the denominator there is no 2. So why did I write this? ये 2 कहाँ से ले आया मैं? There is no 2 here. Yes, sir. It is just a square. So tan alpha 1 minus tan beta by 2 square divided by 1 plus tan beta by whole square. Tan inverse. Hmm. Okay, 1 minus tan beta by a full chance है कि I will do a Mistake. nice blender and Hmm. then search 1 plus tan beta by 2 whole square. ये LCM ले लिया मैंने. Hmm. Okay, so this is whole square minus tan square alpha by 2 1 minus tan beta by 2 whole square divided by 1 plus tan beta by 2 whole square. I think ये तो गया एक. Hmm. So this is tan inverse 2 tan alpha by 2 1 minus tan beta by 2. Oh भाई खत्म हो जा. Tan inverse. I'm just waiting for अच्छा एक अगर कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस हुआ ना कैंसिल तो Hmm. एक तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan बीटा बाय 2 विल कम दिस वन. Yes, sir. ये नीचे है ना तो ये दिस विल गो अप. ये तो चला गया और नीचे आ गया ये वाला. तो फिर टेक इसमें से 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस 2 tan बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 plus tan square beta by 2 and this is minus 2 tan beta by 2. Oh man, look at this. Very endless. क्या बन रहा है? Okay, so I'll just paste the last step. I think we are on track. So I don't want to do any error here. बिल्कुल same जा रहा है अभी तक. ठीक है, Yes, sir. because trigo wise. Okay, so if you remember, see the cos beta can be written as cos square beta by 2. इसमें नहीं लिखा है इसने बट आई न्यू द आंसर क्योंकि ट्रिगो का है. So if you notice on the right hand side, हमारा यहाँ तक ठीक है. So 2 tan alpha and we will also get a 1 minus tan square beta by 2. Denominator में we have opened the bracket. हम common ले लेते हैं इसमें और Okay. ये 2 tan beta by 2 ये वाला और एक ये वाला alpha square वाला they will come together and these two and this they get factorized. ये वाला इसमें भी 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इसके पास भी 1 प्लस तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ये हो गया और 2 tan बीटा और ये वाला 2 tan बीटा इकट्ठे आ गए ऐसे कॉमन लेके राइट. Yes, sir. तो ये जो टर्म है cos बीटा इज cos स्क्वायर बीटा बाय 2 sin स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर बीटा बाय 2. So this is cos square beta by 2 plus sin square beta by 2 is equal to 1 minus tan square beta by 2 upon 1 plus tan square beta by 2. So we do have tan square beta by 2 and available to us. ये दिख रहा है ये वाला? Yes, sir. ये. So what he has done now is he has taken the terms and he has written 2 tan alpha 1 minus tan square beta by 2 and divided by
1 plus tan square alpha by 2, 1 plus tan square beta by 2. And so this is 2 tan alpha by 2. This is, and this is 1 plus, इसमें से कुछ कॉमन आया इसका? नहीं, denominator. There is no common in the denominator. No, there is nothing. So how has he written this? 1 plus tan square alpha by 2 कैसे आ गया इसका कॉमन? Because he is making a case कि ये 1 plus tan square beta है और ये 2 tan beta by 2 जो है, this is 1 plus tan beta by 2 whole square, a square plus b square plus 2ab. But कोई कॉमन तो ले नहीं पाया ये, और couldn't take any common. So why has he written? So this is fine. This is also fine. And then I think he is either dividing it by 1 plus tan square beta से divide करा है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को. तो अगर ये 1 plus tan square beta से डिवाइड करा है तो ये कट गया, और एक बार डिवाइड करा है 1 plus tan square alpha by 2 से, तो भी कोई सेंस नहीं बन रही. 2 tan alpha by 2 plus 1 plus, नो, कॉमन भी ले लिया, ये रूल भी पता है मेरे को. सो आई वॉन्ट दिस टू गेट अ कॉस बीटा. सो इसने देखो ये कॉस बीटा बनाया है खुद ही. ओके, एंड he needs a tan alpha also. So the sine of alpha can be written as 2 sine alpha by 2 cos alpha by 2 divided by 1. But you can write 1 as sine square alpha by 2 plus cos square alpha by 2. So divide the whole thing by sine square alpha by 2, cos square alpha by 2. The numerator will become 2 sine alpha by 2 divided by 1 plus tan square alpha by 2. ठीक है, तो ये तो चलो साइन अल्फा. व्हाट ही हैज, ये 2 tan अल्फा जो है ना, इसके नीचे इसने ये एक लिखा है, ये वाला डिनोमिनेटर. तो ये दोनों मिला के बन गए साइन अल्फा, राइट? सो दिस इज योर साइन अल्फा एंड दिस इज योर कॉस बीटा. मतलब ही हैज यूज्ड दिस एंड दिस, एक बार ऐसे इससे डिवाइड करा और एक बार इससे करा, वही जो चीज है दोनों, all both these terms which is 1 plus tan square alpha and 1 plus tan square beta, तो इसने खुद डाले है ना to get a sin alpha and cos beta, ये दोनों. तो इसने नीचे भी लिख दिए, देखो ये. and then when he has divided by both the terms, तो एक में tan square beta कट गया, तो उसमें tan square alpha रह गया, और दूसरे वाले में tan square अल्फा कट गया, तो नीचे क्या आ गया? 1 plus tan square बीटा. तो ऊपर वाला जो है साइन अल्फा है, नीचे वाला cos बीटा है. ये जो पूरा का पूरा है, दिस थिंग, राइट, वी नो दिस इज cos अल्फा, एग्जैक्टली लाइक दिस. एंड देन दिस होल थिंग इज अ साइन बीटा, एग्जैक्टली लाइक दिस. आंसर. Any step which is not clear in your head, I can repeat it. नहीं. I think it has struck you also. हाँ, बस थोड़ा शॉक क्वेश्चन. हाँ, वो तो है. देखो यही यूज करा है इसने, बट दोनों में यही यूज करा है. He has actually reached this level and then he has picked up this and said इसको कैसे मैं कन्वर्ट करूं साइन अल्फा में. इसको पता है कि this strategy works, right? So he needs this 1 plus tan square alpha by 2. तो इसने वो लिख दिया. तो इधर डिवाइड करोगे तो इसको भी तो डिवाइड करोगे ना. हाँ, यस. फिर इधर इसको मालूम है आई नीड अ कॉस बीटा, तो इधर अगर इसको भी डिवाइड करोगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा. हाँ. फिर इन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखा क्योंकि बीच में प्लस साइन है. जब सेपरेट सेपरेट लिखा तो ये इस साइड कट गया, और जब इसके नीचे आया तो ये वाला पार्ट कर गया, तो ये बच गया जो वो साइन बीटा बना दिया है ना.
very trigonometric centric. So one needs to be बहुत very ज्यादा. good in trigonometry. मतलब आपको trigonometry में strength होनी चाहिए to do this. Assume somebody has no clue what trigonometry is because class 11th base is very weak. How will they do class 12th? अभी तो नहीं. physics में when you do exemplar properly, last few questions are based on integration. Okay, so हाँ. you will see that you really need to understand application of integration. कैसे किसको डी Yes. करंट लेना है, किसको डी आई बाई डी टी लेना है, किसको क्या लेना है. It's not that it is difficult, but point is your class 11th has to be done with equal seriousness, not less. बोर्ड का प्रेशर होता है, बट बोर्ड भी हाथ से निकल जाएगा if some of the chapters of class 11th are not done properly. Try this. I find exemplar solved questions to be difficult ones. हाँ, मेरे को भी लगता है. Unsolved थोड़े ठीक होते हैं, मतलब ये तो कुछ. I got look at the number of examples. Yes sir. 21 to 41 MCQ दिए मैं. हम्म. मतलब 20 तो MCQ करवाएगा. Yes sir. अब tan इनवर्स की वैल्यू ब्रांच, आई टोल्ड यू यू टू मेमोराइज. नहीं याद हुई तो गए. साइन वाली होती है. Minus सिर्फ pi by 2 to pi by. इंक्लूड नहीं होता पाई बाय 2. रिमेंबर दैट. स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, गोल ब्रैकेट है. Yes sir. ये दिख रहा है. हाँ. इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड. सेकंड वर्स मेमोराइज करा हुआ है तो हो जाएगा, नहीं तो गए. So you will get these Yes sir. questions. Graphical and memory oriented questions जो है ना, ये पूछते हैं ये. तो अब they have asked for cos and it's you can see it is other than the principal. मतलब जो next में वो नेगेटिव आता है, वैल्यू जो उसकी फ्लक्चुएट करती है, 0 to पाई होता है ना उसका. तो नेक्स्ट कौन सा इंटरवल है जहां पे ये -1 to 1 फ्लक्चुएट करेगा. मतलब दे विल नॉट स्पेयर यू. अनस्पेयरिंग है कि इजी देके काम चला लो. नो. Yes sir. अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. भाई यार तुम रट के आ गए ना 0 to पाई, ये तो आंसर तुम्हें लग रहा है अट्रैक्टिव, लेकिन भाई क्वेश्चन इज अदर देन. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट. तो ये आपका 0 to पाई ऐसे जाता है. देखो 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, -1 होता है, ये पाई हो गया. फिर ये 3 पाई बाय 2 हो गया, और ये 2 पाई हो गया. बट योर प्रिंसिपल ब्रांच हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 1 to -1. बट दिस ब्रांच इज -1 to 1, तो ये तो होगी नहीं. अब क्या होगा, ये 2 पाई तक पहुंच चुका है. अब ये ऐसे आया. So this is 2 pi and this is 3 pi. 0 पे वापस आ गया ना. Yes sir. सॉरी -1 पे आ गया. सॉरी 0 तो ये होता है ना, ये. अच्छा. So you can draw a graph and find the answer. When is the next one it is appearing? Yeah. Next. I think this is more of calculation. 43 को स्प्लिट करा है 40. 8 पाई, जो 8 पाई को फर्क नहीं पड़ता. Cos of
2 pi के multiple हो तो angle remains the same. If you write cos 4 pi plus something, it remains cos theta. Cos of 2 pi plus theta करोगे तो सेम ही आ जाता है ना. yes sir. पीरियड होता है इसका. Cos of 4 pi plus theta is cos theta. Cos of 6 pi plus theta is cos theta. Cos of 8 pi plus theta is equal to cos theta. So ये 8 pi plus लिख दिया. So this is cos of 3 pi by 5. This thing. इस वाले को तोड़ के he's just reduced it to cos of this and then sin वाली property लगा ली pi by 2 वाली. Answer. ठीक है. Sin आ जाएगा ना फिर. Very friendly. Now I would recommend anyone to do every damn question of Exemplar. Yes sir. Salt. मतलब छोड़ना नहीं चाहिए. I've seen a lot of sample papers now. So many questions from Exemplar. Yes, sir. Straight copied. Mhm. Okay, this is find the domain, which is again domain and function. We will revise domain and function again. Very important. I will revise it. Chapter 1 है ना? We'll redo that. ठीक. मैंने 11th standard के context में सिखाया, लेकिन एक बार उसमें revise करूंगा मैं पूरा. There are changes. The domain of sin inverse 2x is, so let sin inverse 2x be this. So 2x is equal to sin theta. Sin theta. So sin theta has to be always between this. So 2x will lie between these. ठीक. When you write with your own hands, you will be able to answer straight away. Okay, maxima minima type का question आ गया. Anyway, so this is mind blowing. The NCERT exemplar. Quality of questioning. Some places is really nice. पढ़ाया हो ना हो. Somebody's applied their minds to make these questions. Yes sir. Greatest and least value. भाई sin square theta तो है नहीं है. It's not sin square theta plus cos square theta. This is something very different. Starkly different than what we have seen. Greatest and least values. The hell did that mean? Put sin inverse x is equal to, so the, see the value is x, but एक बार sin theta is written as sin inverse, and this is cos inverse of the same angle. So the values, okay. Complete the square. My God. A square plus b square दे दिया ना इन्होंने. Difficult one again. Very tricky. Yes. Very, very, very tricky. मैं तो प्रॉपर्टी लगाने के चक्कर में था. Never struck me that you have to complete a square. उससे काम हो जाता है. So if you complete the square, 2ab, add and subtract 2ab करा है. Yes sir. Okay, so this whole thing is because ये जो है ये pi by 2 है ना. So this becomes pi by 2 whole square. So this did when it this and this actually caught my attention. ये दोनों, but I don't know why. I couldn't explain. Square से मुझे लगा कि square है तो शायद square में ही आंसर हो, but now there is a logical reason, okay, which is complete the squares because sin inverse x plus cos inverse x तो कुछ होता ही है. So plus 2 sin inverse x cos inverse x minus 2 sin inverse x cos inverse x.
pi by square times 2 sin inverse. Then what he has done is he's converted this cos inverse x into using this property. Pi by 2 minus. Pi by square minus pi. Okay, he has then opened this, taken 2 common of all, ये 2 सब में से ले लिया और sin inverse x whole square. Sin inverse x whole square is sin inverse x minus pi by 4. अच्छा, so he has completed this square also. ये और ये second time square completion. This is a square and this is b square. मतलब pi square by 8. ये स्क्वायर कंप्लीट करा क्योंकि ये जो है 2ab है और ये एक्स्ट्रा आ गया और ये दोबारा से now if you have to do the least value of this, okay, the least value of this whole thing can be okay, so now you only have a sin inverse x deciding everything. Yes, So if you want to find the greatest value, then have the greatest value of sin inverse x. Right, so this is minus pi by 2 अगर डालते हो नेगेटिव में तो स्क्वायर है क्योंकि ये तो पूरा फुल पॉजिटिव बन जाएगा. सो इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू minus pi by 2, this whole number is greatest. If sin inverse x is equal to plus pi by 2, this number will be the least. हाँ, लीस्ट कब होगा ये साइन इनवर्स एक्स? अगर मैं 1 डाल दूं तो ये पाई बाय 2 बन जाएगा ना. पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू पाई बाय स्क्वायर प्लस 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 8. ठीक है, आ गया. Now, because if you notice, the last expression tells you that the dependency of maxima and minima is only on the value of sin inverse x. अब क्या चुनते हो उसको? तो इसने sin inverse x को ले लिया minus pi by 2. यहाँ भी. So this is the final. You have to minimize and maximize this expression. तो यहीं से control होगा वो. So if you put it equal to minus pi by 2, so it will become very large क्योंकि है तो square ना. भाई ये माइनस पाई बाय 2 डाल दिया अगर स्क्वायर कंप्लीट होने से सब ऐड ही हो जाएंगे सब कुछ. एवरीथिंग इज प्लस 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 प्लस. सो द ग्रेटेस्ट. एंड इफ यू पुट इक्वल टू पाई बाय 2, रिमेंबर दैट पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 to pi by 2 and therefore he is using them. So all the context of this question, what is the least, and is in that x is between, इसने बताया नहीं है, but कुछ लिखना चाहिए था इसको कि what is x, between, कहाँ से कहाँ तक देखना है मैं. Something should have been given. First इसने साइन देखा और साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाय 2 टू पाई, उसमें से एंगल चुने इसने. एक बार ये चुना, एक बार ये चुना. ठीक है. इसके और भी होते हैं साइन इनवर्स एक्स के, बट इसने सबसे छोटे वाले चुने हैं, स्मॉलेस्ट. डिफिकल्ट वन. Yes, sir. That you have to envisage squaring 2 times, not even once. Double you have to do, double the effort. एक स्क्वायर तो समझ में आ गया कि आई नीड अ पाई बाय 2. दूसरा स्क्वायर again you have to do and then control it through the principal value branch angles. I think if you see the concept, I think one of the most conceptual questions, very deep. Yes, sir. Okay.
Sine inverse sine of. So you can't apply your general rule here because the angle is not between minus pi by 2 to pi by 2. Pi by 2. So that makes it hard. Unless you reduce this to that value. मतलब इसको आप value reduce कर सकते हो. You can write it as sine inverse of sine of. तो ये बन जाएगा 720 minus 120. So sine inverse also shows the same behavior. 2 pi पे it is repetitive. So 2 pi minus 2 by 3 pi is equal to sine inverse. Sorry, this is not 2 pi, this is 4 pi. 4 into 180. So this will become sine inverse sine of minus 2 by 3 pi. So this will become minus, I'll take out, minus sine inverse sine of 2 by 3 pi, right? Even this is not between the 90 to minus 90. So can I write it as 90 degree plus 30 degree? 90 plus 30 is 120. This is 120. So sine inverse sine of 90 plus 30 degree is equal to sine inverse cos of 30 degree. Or I can write this as sine inverse of sine of 60 degree. Now I can use it. I got it between minus 90 and 90. ठीक है. मैंने इसमें नेगेटिव की गलती करी हुई है कहीं पे. जस्ट एलिमिनेट दैट. अच्छा, 4. माइनस साइन की गलती, बाकी सारा ठीक है. ठीक. So let's do one thing. Let's continue this discussion tomorrow ठीक है. also. ये complete नहीं होगा अभी. हाँ. क्योंकि I think the solved ones are very difficult ones and we should revise them. ठीक और है. उसके बाद there are I think around 55 questions in unsolved. We will just go to one type of each and solve and finish it. So Okay. tomorrow morning we should be able to complete this. अभी नहीं हो पाएगा ये. I ठीक. find some very hard questions in maths. I've seen the sample paper. They're asking a lot from Exemplar. In fact, the solved question from Exemplar is also being asked. Okay. So no point leaving any question marked. Like MCQ type है, but it's giving a very new perspective to this chapter. ठीक है. NCERT में तो कुछ ऐसा था ही नहीं दूर दूर तक. There was नहीं. nothing in it, right? So this does give you a new sharpness. ठीक है, see you tomorrow then, and let's discuss this. ठीक है, sir. Alriady. Bye. Thank you, sir. You're welcome. Have a good night. Yes, sir.